Hello everyone, I hope you guys can hear me and see me. Please write yes in the chat, guys. If there is no answer because we are here on the stage. Guys, write please yes in the chat if I'm audible and visible. Great. So welcome everyone for the uh, natural gas pre-expiry. Sorry, natural gas pre-expiry session, and we will have Harsh with us today for the session. Right. Sorry guys, actually, my system was loading. So yes, coming back to the same thing, we will have Harsh with us today, and he's already joined. I'll invite him to the stage. Harsh, I have invited you to the stage. Yes, Harsh is already here. Yes, Yes, Avinash. great, Harsh. Let me know. When we are good to go. So I'll hand over the session to you. Sorry. Yes, I think we can start in next couple of minutes. Sure. So guys, please write yes or any emojis. How is your portfolio trading as of now? Considering all the market momentums we been observing from last one and a half year or a month. Sorry, 1.5 month. So what exactly your color of a portfolio is? Please drop in the comment section, red or green or sideways. मयूर जी, आपका डीमैट अकाउंट में मे भी कोई अलग कलर होगा. सो मैं ये कह रहा था अंजू जी कि जैसे कि अभी 1 डेढ़ महीने से मार्केट एकदम साइडवेज है, तो आपके पोर्टफोलियो का क्या कलर दिख रहा है? राइट, लाइक इट्स अ ग्रीन और इन अ रेड. Just a small client engagement part I just wanted to do, considering there is a lot of volatility and lot of equity stocks have been corrected to 30-40% nearly. Commodities में actually देखा जाए तो there is never a right opportunity, but yes, it depends upon the volatility and the volume momentum as well. So you can definitely invest in the gold, silver, in this segments, commodity segments, because these are the segments you definitely get a good ROI for the future point of view. I can see majorly सबने रेड ही लिखा है. Uh, Great, but yeah, I guess the quote really suits here. Sit tight. So in this situation, you have to definitely sit tight and hold your positions. Don't have a lot of activity. You know, be very precise and very limited about your position sizing and trades. But commodities market में maybe थोड़ा सा अलग होगा. Since we have already have an expert with us for the commodity, Harsh sir. He will be the right person to give you a very deep understanding about the market, your investments, and right now for the expiry as well. So yes, once Harsh sir will hand over the session, I'll hand over the session to Harsh. So definitely, he will guide you. Yes, Avinash. So I think we can start with the session now. Yes, great. Over to you. Then you can start the session. You can, share your screen and you can, you know, go ahead. Uh, okay. So thank you, Avinash.
Good evening, everyone. Welcome to the natural gas live pre-expiry session. So I'm happy that we had multiple profitable trades in yesterday's session. काफी अच्छा movement था, both in silver as well as natural gas. So I think आप लोग ने इस प्रॉफिटेबल ट्रेड का एक प्रॉफिटेबल सेशन का बिल्कुल पूरा फायदा उठाया होगा एंड वी विल होप कि आज भी जो है हम एक बेस्ट यूज के साथ लर्निंग प्लस अर्निंग का जो हमारा एम है वो अचीव करें. Okay, friends. So meanwhile, I'll share my screen. Just give me a second. I hope the screen is visible to you all. Absolutely, Harsh. All right. So yes, friends. Before discussing the technical angle and the trade setup, I would like to firstly give a touch upon the macro updates that why we are seeing such kind of move in crude oil, especially in natural gas. हमने देखा है कि पिछले 6 दिनों से natural gas में एक constant rally आया है. And if you look at the daily chart in the screen, overall since past 6 to 7 odd trading sessions, it has already risen by somewhere around 70 to 80 odd rupees. The most volatile counter across the asset classes, जैसे हम पहले भी बात कर चुके, डिस्कस कर चुके कि इसका जो एक ट्रेड सेटअप अगर इसमें हम लेते हैं, एंटर करते हैं, the ultimate outcome is very quick, either profit or loss. So इसमें थोड़ा जो है संभाल के करना है. But looking at that daily chart, we can see कि जब trendy moves इसमें आते हुए दिखे, काफी अच्छे आते हैं. So इतना ये सारी जो चीजें डेवलप हो रही है वो क्यों हो रही है? Because commodities में बैक टू बैक रोज कुछ ना कुछ इवॉल्व होते हुए देखा है हमने. देखा है कि काफी सारी चीजें अनफोल्ड हुई है. नेचुरल गैस को लेके अगर हम बात करें, in since past in the start of this since the start of the week we could see that US में जो है वो कोल्डर टेम्परेचर की वजह से, एक स्टॉर्मी वेदर कंडीशन होने की वजह से हीटिंग डिमांड बढ़ते हुए दिखी है, जिसके चलते ओवरऑल मैक्रो वाइज डिमांड जो है एनजी में वो बढ़ते हुए दिखा है. एंड वी वुड फर्दर डिस्कस दैट हाउ ऑल दिस इज आल्सो इन सिंक विद द टेक्निकल्स. So along with that we can see कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस गैस में जो डाले हुए थे वो मिस्टर ट्रम्प ने आते आते ही वो रिजेक्ट कर दिए. तो एक वो जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस था वो लिफ्ट होने के कारण एक इंटेंस प्रेशर देखने मिला, बाइंग प्रेशर देखने मिला, और डे बाय डे इंटरेस्ट है वो एस्केलेट होते गया. आज भी हमने देखा कि गैप अप समवेयर अराउंड गैप स्ट्रॉन्ग गैप अप होने के बाद भी प्राइसेस जो इमीडिएट इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन 1-2 घंटे के अंदर 88 89 टेस्ट करके देन इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला. करेक्ट. सो नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो along with the discussion about the macro part, टेक्निकली ऑल्सो वी कैन सी कि एक तेजी का जो मूव था, एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि ब्रेकआउट होगा, वो समवेयर अराउंड 13 to 14 फेब से आते हुए दिखा, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअवे गैप के बाद प्राइसेस अल्टीमेटली हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद 308 309 का जो लेवल था वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. वो बिल्कुल अक्रॉस सिंस पास्ट 1 वीक it was trading above that level. एक बार slightly एक knee-jerk reaction आया जहाँ पे हमने देखा prices test हुए lower level, but because the overall trend is pretty up, we can see the rally एक possibly somewhere around 70 से 80 रुपए की rally within 3 to 4 days we have seen. 2 से 3 दिन में ही ये मूव आते हुए देखने मिला है. So looking at the setup, एक चीज we can understand कि अगर हम कोई भी पोजीशन ये ट्रेंड के अगेंस्ट बना रहे, ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वो एक तुम्हारा स्टॉप लेगा और फटका जो लंबा लगेगा.
बट इन केस इफ यू स्टे विद द ट्रेंड, अलोंग द ट्रेंड, तुम्हारा स्टॉप जो है 319-20 के लेवल पे भी अगर किसी ने एंट्री किया हो, 8-9 का स्टॉप रख के भी चल सकते, तो एक अपसाइड में जो व्यू है 50-60 रुपए का, वो आपको खेलने मिल सकता था. सो द आइडिया इज प्रेटी क्लियर कि इफ यू नो ट्रेड अलोंग विद द ट्रेंड, the risk reward also, if you see 1:5 का risk reward, I think hardly there is any asset class available जिसमें ये देखने मिल सकता हो. So definitely this is the main reason कि इसमें जो है प्रॉफिट्स और लॉस है वो काफी लंबे होते हैं अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो ना करें तो. ओवरऑल लुकिंग एट द अर्ली चार्ट इन नेचुरल गैस, एक आज शार्प रनअप के बाद एक फॉल कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो डेफिनेटली आज इनडिसाइसिव है, थोड़ा कम समझ रहा है. एंड इन पास्ट 15 to 3 to 4 आवर्स वी कैन सी कि किस तरीके से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है. तो ऐसे ट्रेंड इसका क्लियर आउट नहीं है, बट डेफिनेटली लुकिंग एट द क्रूड ऑयल सेटअप वी कैन सी कि बाइंग ऑन डिप्स जो है वो काफी इंटैक्ट है. एंड एक नई चीज आज जो हम देखेंगे क्रूड ऑयल के चार्ट में, वी कैन सी दैट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर इलियट वेव हमने यहाँ पे बिठाया हुआ है. हम देख सकते हैं किस तरीके से एक फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ एंड देयर वाज अ करेक्टिव मूव, तो ये हमारा होगा वेव 2. उसके बाद जो है वेव 3 के तरफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस मूव होते हुए दिखे. यस, कल का जो रनअप था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, somewhere around 7 to 8 in the late evening, काफी अच्छा था, बट होल्ड नहीं किए प्राइसेस. वी सॉ slightly weak opening in today's session, but still prices are holding above 60 to 40. So I would recommend guys a trade in crude oil. As long as prices are holding above 60 to 40 in crude oil, we can see a rally and next leg of up move towards 6360 followed by 6410. तो एक डिसाइसिव मूव क्रूड ऑयल में बनते हुए दिख रहा है. स्ट्राइक टू फोकस इन क्रूड ऑयल वुड बी 6350 कॉल ऑप्शन. $6,350 का कॉल ऑप्शन will buy at current market price in crude oil. One can enter at 140. Currently it is trading at 140. इसमें हमारा स्टॉप रहेगा 125 का with the target of 165. So yes friends, आज का जो ट्रेड है हमारा स्ट्राइक टू फोकस है 6350 क्रूड ऑयल कॉल ऑप्शन. We will buy call option crude oil. We expect the bullishness to continue. 140 में बाय करेंगे, स्टॉप रहेगा 125 का with the targets of 165. In case if we किसी को अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना हो somewhere around 155 और लेवल पे बिल्कुल कर सकते हो. That would be our 1:1 as per the risk profiling, risk management. So and in case किसी को अगर होल्ड करना है ये ट्रेड, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके. if someone is doing the lots in 2 or more multiples of 2, तो 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो टारगेट 1 पे. So target 1 would be 155 of the call option. Target 2 is 165. Currently it is quoting at somewhere around 142. In case अगर किसी को 140 में एंट्री ना मिली हो, 142 में भी बाइंग करा सकते हो, because I think 1-2 point would not make much difference, major change. So in case अगर किसी ने बाय नहीं किया हो, 141, 142 के लेवल पे भी एंट्री कर सकते हो. The stop and target would remain the same. So guys, जैसे कि हर्ष सर ने ऑलरेडी हमें ट्रेड दे दिया है, राइट, टू बाय क्रूड ऑयल 6350 कॉल near the current market price, near 140 with a stop loss of 125. the target will be 165. and अगर जिसको partially profit book करना है, right, so they can book their profits near 150 you suggested, right? 155. right, so 155 के यहाँ पे आप partially profit book कर सकते हो once you initiate the trade.
So this is the only trade, guys. As of now, we have shared in crude oil. So stay tuned and be with us. If there will be any other potential trade, we will definitely, share with you guys. So yes, Harsha, you can continue. Yes. So that was about the technical perspective both in crude and NG. सो आज ज्यादा से ज्यादा फोकस भी है ये दो काउंटर में ही रहेगा बिकॉज वी हैव इम्पोर्टेंट डेटा टुडे. तो डेटा में अगर हम देखें वी हैव क्रूड ऑयल इन्वेंट्री एंड नेचुरल गैस इन्वेंट्री. सो मूवमेंट विल बी देयर. बस यही है कि हम एक आइडियल रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लेंगे, एंटर करेंगे. सो इफ इट वर्क्स इन आवर फेवर वी कैन book in profits because the data timings are somewhere around 8 to 9. तो तभी मूवमेंट ज्यादा होगी. बट डेफिनेटली हम एक सेट व्यू पॉइंट के साथ इनिशिएट कर सकते हैं एंड होपफुली ड्यूरिंग द सेशन ट्रेड बुक हो जाए. इट वुड बी बेटर. बट यस ओवरऑल आउटलुक बुलिश है. तो अगर आपको डिप में भी एंट्री करने मिले तो बिल्कुल कर सकते हो क्रूड में. नेचुरल गैस आई एम स्टिल वेटिंग बिकॉज थोड़ा फ्लैट हो चुका है. बिकॉज इसमें जो मूवमेंट है ना वो ऑलरेडी आज की देख के ऐसा लग रहा है कि काफी आ चुकी है. बिकॉज आफ्टर ओपनिंग एट समवेयर अराउंड 378 लेवल वी सॉ प्राइसेस टेस्टिंग 388. उसके बाद 388 से एक शार्प फॉल आया एंड प्राइसेस डिड रीच 360 और लेवल. सो डेफिनेटली 15 से 20 रुपए का मूव ऑलरेडी दोनों साइड हमने देख लिया. तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूव राइट नाउ. But still we will continuously monitor it. If we could identify and find any good trade, would like to initiate and suggest second trade as well. बस थोड़ा एक हम वेट एंड वॉच करेंगे बिफोर एंटरिंग द ट्रेड इन एनजी. टिल दैट टाइम अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो please feel free to ask. कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में we can definitely discuss. Definitely, there are a couple of questions. Sir, NG का क्या view होगा considering data would data come positive or negative for NG prices? I guess आपने already इस पे बात कर लिया, right? Harsh. Yes, nice question Nikita. So just to add on to the further to this question कि एनजी में जो है ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि डेटा जो है वो घट के ही आएगा. एंड बाय एनी चांस इफ इट इज फर्दर मोर नेगेटिव तो उसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस में पॉजिटिव होगा. स्टिल आई विल शेयर द स्क्रीन एंड डेटा कहाँ पे हम देखते हैं investing.com में. वी कैन discuss that once again so that if any one of you would like to check can also have a glance. So investing.com पे ये data available होता है. So now we'll look at today's data. So today data we can see कि earlier it was minus 100B and now it is expected कि that would be minus 191B. So further minus आ सकता है, डेटा घट के आ सकता है. इसका मतलब ये हो कि और घट के आ सकता है. But by any chance, if the actual data is, below minus 191, let's say for example minus 170 या minus 150 ऐसा कुछ आता है, माइनस होने के बाद भी इसका इम्पैक्ट जो प्राइसेस में नेगेटिव रहेगा बिकॉज इट इज लेस देन minus 191. तो ये चीज ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि अगर डेटा minus 190 से और ज्यादा घट के आता है, फॉर एग्जाम्पल minus 200 220 ऐसा कुछ, तो इम्पैक्ट जो है प्राइसेस में पॉजिटिव होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डेटा व्हिच विल बी आउट ऑन 9. सो एट 9 PM तो 9 बजे ये डेटा जो आएगा एक्चुअल. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल सी मूव्स इन द नेचुरल गैस काउंटर. So the viewport remains fixed. अगर minus 220 200 कुछ आता है, ज्यादा घट के आता है, इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा. And if it is around minus 150 minus 170, ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ. There can be wider difference as well. But just to make you all understand, ये एक एग्जांपल की तरह मैं ले रहा हूँ इसको.
तो मे बी इम्पैक्ट नेगेटिव हो अगर -170 ऐसा कुछ है। तो एक्चुअल Great. डेटा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो 9 बजे यू नो वी कैन डिसाइड कि आगे चल के बेस्ड ऑन द डेटा एक क्या आउटकम बेटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तब तक हमें उसके लिए वेट करना होगा। Right. So जैसे कि guys मैं crude oil track कर रहा था, right? It's trading near I guess 139.90, right, हर्ष sir? Yes, so currently crude oil is trading at 140. It is at our entry price only. So it is good that we are getting to take this position. तो अगर by any chance अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया, I would suggest कि 140 it is at our entry point only. अगर ये लेवल पे भी किसी को एंट्री करना है बिल्कुल कर सकते हो। Right. एकदम ब्रेकआउट लेवल पे ही है वो। जैसे ये लेवल निकलता है यहाँ से 150 इजी दिख रहा है। So Yes, Viras. So yes, so looking at the call option chart also, it is in sync with the futures. It has to be so. अगर futures prices में move होता है तो उसका जो positive reflection है वो call option में भी हमें दिखेगा, and accordingly we can play out on. So yes, guys, we are parallelly tracking the trade as well, and जैसे कि हर्ष आपने ऑलरेडी और नेचुरल गैस पे बहुत सारी बातें भी की है, राइट, एंड आपने बहुत detailed overview भी बताया. So do we have any other segment, in the commodity where we can, initiate the trade like in zinc, mini gold, or silver, or any into natural gas? Yes, Avinash. क्योंकि guys, if you don't know, please make sure you visit Stockholm on a regular basis. आज ही हमने गोल्ड मिनी पे हमने ट्रेड शेयर किया था, राइट, एंड वी हैव शेयर्ड ऑन क्रूड ऑयल एज वेल, वी हैव शेयर्ड ऑन नेचुरल गैस. तो हम लोग यहाँ पे स्टॉकहोम पे हर दिन ट्रेड्स भी शेयर कर रहे हैं ऑन द कमोडिटीज मार्केट. सो don't forget, to visit Stockholm and get those trade and initiate the trade as per the stop loss. अमन जी डेफिनेटली हर्ष सर आपको बताएंगे क्रूड ऑयल की कौन सी सीरीज बोली है, प्लीज टाइप करके बताओ. द मार्च सीरीज, राइट? Yes, friends. So I think कि apart from crude and NG, people want to know about zinc. Correct, Avinash? Right, Harsh, any of the segment into Okay. So I think हमने गोल्ड का एनालिसिस जो है वो लास्ट वीक भी देखा था, एंड वी कैन सी कि 86,500 का जो लेवल है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, एंड करंट अप ट्रेंड जो है वो गोल्ड में थोड़ा सा पॉज हो चुका है, बट डेफिनेटली इट इज जस्ट अ पॉज. देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज एंड हायर चांसेस कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करे, बिकॉज एज सच देख के लग भी रहा है कि ये ओवर द नाइट इट वुड रिवर्स. बट यस, अगर हमें डिप मिलता है तो गोल्ड डेफिनेटली एंटर करना चाहिए, एंड एनी डिप टुवर्ड्स 84,000 84,500 could be the good possible entry point. ये सेम चीज हमने लास्ट वीक के सेशन में भी डिस्कस किया था, एंड 84,600 84,500 लेवल दो बार टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है, एंड वी कैन सी कि वो लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ बैठ रहा है वहां से एक फॉलो बाइंग भी आ रही है. तो कभी कभी कैसा होता है कि वी हैव टू वेट फॉर द एंट्री राइट सेटअप. तो हायर टाइम फ्रेम चार्ट हम देख सकते हैं उसके लिए, जिससे क्लियर आइडिया आ सके. इंट्राडे चार्ट में भी थोड़ा स्कैरी लगे कभी कभी, बट इफ यू मूव एट हायर टाइम फ्रेम्स थोड़ा जो क्लैरिटी है वो ज्यादा बनते हुए दिख सकता है. तो गोल्ड में तो आउटलुक पॉजिटिव है हमारा एज यूजुअल, बट फ्रॉम करंट लेवल इफ वन नीड टू एंटर, आई वुड सजेस्ट कि वेट for the prices to cool off for now, because already strong run up आ चुके हैं. बट डिप बेस्ड बाइंग का जो हमारा व्यू है वो इंटैक्ट है. डिप बेस्ड बाइंग बिल्कुल करना चाहिए गोल्ड में, एंड यस 86,500 600 के ऊपर अगर ब्रेक होता है
तो फर्दर मोमेंटम बिल्टअप होते हुए देखने मिल सकता है, टेस्टिंग 88,000 on the higher side. So we'll wait for that. And looking at the momentum oscillator RSI, it is trading above overbought zone. सो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस काफी बार ये किया हुआ है कि जब मोमेंटम ऑसिलेटर ओवरबॉट जोन के ऊपर है, प्राइसेस में स्ट्रॉन्ग रहना पाता है. वी ऑलरेडी हैव सीन कि एक बार ये प्ले आउट अच्छे से हुआ एंड स्टिल आरएसआई इज इंडिकेटिंग कि मोमेंटम जो हायर साइड में उसमें अभी भी स्ट्रेंथ है. सो डेफिनेटली कोई भी डिप मिलता है तो अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है. So because we're discussing about gold, I think silver पे भी एक थोड़ा फोकस दे सकते हैं. As compared to gold, friends, silver में जो scope of movement है towards upside is still. तो यहाँ पे हम पोजीशन अगर बेट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले, बिकॉज हमने देखा कि पहले जो भी फॉल आया है वो ज्यादा होल्ड नहीं किया. इट इज फॉलोड बाय अ बाइंग इंटरेस्ट ओनली. तो आउटलुक सेम है सिल्वर में, बुलिश ही रहेगा विद द टारगेट ऑफ एंड 1,05,000. सो 1 लाख का जो लेवल है वो मे बी नियर टर्म में हमें देखने मिले, बट 1,05,000 का जो है वो थोड़ा नियर टू मीडियम टर्म व्यू है. Remains bullish. The bias is positive both in gold and silver, but silver looks slightly more promising because थोड़ा रिलेटिवनेस स्ट्रेंथ जो है वो सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के देखने मिल सकता है. एंड यस, हमने ये जो पैटर्न डिस्कस किया हुआ था, सो वी आर वेटिंग फॉर द टारगेट्स इन सिल्वर. एंड वीकली चार्ट में भी हमने सिल्वर का लास्ट वीक चार्ट देखा किस तरीके से इनवर्स एचएनएस फॉर्म हुआ था एंड ऊपर की तरफ टारगेट्स हमारे फॉर्म हो रहे थे. So guys, even जो हमने क्रूड ऑयल पे ट्रेड दिया था, इट्स करंटली ट्रेडिंग एट 144 I guess. Right, Harsh? Friends, coming back to crude oil, we can see that momentum is building up. Currently prices is trading at 6,300. Crude oil has made new high, friends. Days है अपना कॉल ऑप्शन जो है 145 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप देखने मिला है. पेस जो है वो स्लाइटली स्लो है बिकॉज आई बिलीव कि थोड़ा जो स्ट्रेंथ है अप्रूवल में धीरे धीरे पिकअप कर रहा है. बट यस, वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड एंड वेट फॉर आवर फर्स्ट टारगेट. सो बिकॉज थोड़ा अगर मूव स्लो आता है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये कॉल ऑप्शन 155 टेस्ट करता है तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में हम फुल बुक कर सकते हैं. बिकॉज maybe sometimes waiting for the second target can we have to wait for more time because intraday trade है. तो I would suggest कि So rightly said by Harsh, कि क्रूड में हमें डे हाई मिला है, राइट, एंड हमारे कॉल प्राइसेस भी मे बी हमें थोड़ा मोमेंटम देखा है. So Harsh, like as we can see, we are nearly end of the session. So and even people want a clarity. Ayush, I think you are muted. Can you hear me now? Hello.
I hope you guys can hear me now. Yes, I'm not sure audible. Great. So जैसा कि guys हर्ष ने already बताया कि crude oil made a day high today, right? And the coal prices, we had observed some momentum in it. And just as Harsh, we know that we are nearly end of the session and people need some clarity, what exactly till what time they can hold this call of, crude oil 6350. So could you please, update on that or add anything more before we end the session? Yes, Avinash. So before ending the session, I would like to suggest about this trade. वो in case अगर slow आती है, then only it is advisable to book at 1:1, or else one can wait if we see follow up buying for the second target. So depending upon the position sizing, one can accordingly act. So I believe 11 बजे तक ये पोजीशन हम होल्ड कर सकते हैं because we also have, so it is expected कि थोड़ा volatile action, volatile move जो है वो continue रहेगा आगे चल के. तो 11 would be the ideal time to hold this trade. So great guy Harsh, and guys, as we can जो Harsh ने हमें बताया कि we have our inventory data by 9 p.m. right? So you can definitely hold this trade by 11. और अगर आपने इसमें मोमेंटम दिखा आप तो 155 पे फुल्ली प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू होल्ड द ट्रेड टिल 11, please make sure you trail your stop loss so that you will take something from there, right? So yes, Harsh, if you want to add more or anything more, or it's we can just end the session there. Uh, yes, Avinash. So I think that was it for today. I thought कि natural gas में अगर कुछ movement built up हो तो हम trade ले, but it's okay. I think अभी थोड़ा wait and watch में है overall setup. तो we'll not rush for the trade for now. तो आज के लिए I believe crude oil का जो trade है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं. Okay, so I think we'll wrap up the session now. Thank you everyone for joining. Meet you all next time. So yes, that's it guys from our end. Thank you so much Harsh sir. It was a great session, and yes, thank you guys for joining. Please make sure you